नमस्कार। ऑनलाइन दुनिया में नौकरी ढूंढना आजकल आम बात हो गई है, पर इसी दुनिया में छुपे हैं कई फ्रॉड। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि कैसे इन नकली जॉब ऑफर्स को पहचानें और असली मौकों तक सुरक्षित पहुंचें। चलिए शुरू करते हैं। सोचिए, एक मैसेज आता है, बधाई हो, आपकी फ्लिपकार्ट में नौकरी लग गई है। वाह, ये तो एकदम सपने के सच होने जैसा लगता है ना? पर यहीं पे थोड़ा रुकने की जरूरत है, क्योंकि ये खूबसूरत सा दिखने वाला सपना असल में एक बहुत ही सोचा समझा जाल हो सकता है। तो सबसे पहला सवाल जो हमारे मन में आना चाहिए वो ये है, क्या ये ऑफर सच होने के लिए कुछ ज्यादा ही अच्छा नहीं लग रहा? क्योंकि सच तो ये है कि इस तरह के मैसेज इंडिया में तेजी से बढ़ रहे ऑनलाइन रिक्रूटमेंट फ्रॉड का एक हिस्सा है। अच्छा, तो ये फ्रॉड आखिर काम कैसे करते हैं? आइए इस पूरे स्कैम के स्ट्रक्चर को थोड़ा गहराई से समझते हैं। देखिए, ये जो स्कैमर्स होते हैं ये बहुत चालाक होते हैं। वो फ्लिपकार्ट, अमेज़न जैसी बड़ी और भरोसेमंद कंपनियों का नाम इस्तेमाल करते हैं। उनके लोगों और नाम का गलत इस्तेमाल करके वो ऐसा दिखाते हैं जैसे ये जॉब ऑफर एकदम असली है। और देखिए, खुद कंपनियां भी इस बारे में साफ साफ चेतावनी देती हैं। जैसे फ्लिपकार्ट का ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि उनकी नौकरियां बिकाऊ नहीं होती। ये एक सबसे ज़रूरी नियम है जिसे हमेशा याद रखना चाहिए। असली कंपनियां नौकरी के लिए पैसे नहीं लेती। और ये नकली ऑफर्स कहीं से भी आ सकते हैं, मतलब एसएमएस पर, ईमेल में, सोशल मीडिया पर, यहां तक कि फोन कॉल्स के जरिए भी। उनका एक ही मकसद होता है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना और उन्हें अपने जाल में फंसाना। तो फिर सवाल ये उठता है कि असली और नकली में फर्क कैसे किया जाए। चलिए अब कुछ ऐसे रेड फ्लैग्स यानी कि चेतावनी के संकेतों पर नजर डालते हैं जिन्हें कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो ये हैं वो 5 बड़े खतरे के संकेत। इन्हें बस दिमाग में बिठा लेना है। अगर पैसे मांगे जाएं, ईमेल किसी जीमेल या याहू अकाउंट से आए, व्हाट्सएप पर बात हो, बहुत ज़्यादा जल्दी मचाई जाए या बिना इंटरव्यू के बड़ी सैलरी का वादा हो, तो समझ जाइए कुछ तो गड़बड़ है। फर्क देखिए कितना साफ है ना? एक असली कंपनी का एक पूरा प्रोफेशनल प्रोसेस होता है। वहीं दूसरी तरफ स्कैमर्स का फोकस सिर्फ एक चीज पर होता है कि कैसे भी करके जल्दी से जल्दी पैसे ऐंठे जाएं। तो अब जब हम ये जान गए हैं कि किन चीज़ों से बचना है, तो अब ये समझना भी ज़रूरी है कि जो असली कंपनियां हैं उनका हायरिंग प्रोसेस असल में होता कैसा है। चलिए देखते हैं। यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है। जो असली कंपनियां होती हैं वो हमेशा अपने ऑफिशियल और सिक्योर वेब पोर्टल का इस्तेमाल करती हैं। जैसे अमेज़न अपने ऑफर लेटर सिर्फ अपनी ऑफिशियल वेबसाइट से ही डाउनलोड करने को कहता है। वो कभी भी किसी अनजान या असुरक्षित तरीके से डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजते। ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि कोई भी अच्छी नौकरी आपके टैलेंट और मेहनत से मिलती है, किसी को पैसे या फीस देकर नहीं। पर अच्छी खबर यह है कि ऑनलाइन फ्रॉड के बावजूद इंटरनेट पर असली मौकों की कोई कमी नहीं है। बस ये पता होना चाहिए कि उन्हें ढूंढना कहाँ है। एक बहुत ही पॉपुलर और एकदम असली तरीका है रीसेलिंग का। ये एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जिसमें बिना कोई पैसा लगाए कोई भी अपना ऑनलाइन काम शुरू कर सकता है, जैसे सोशल मीडिया पर प्रोडक्ट्स बेचना। और इस मॉडल की सबसे अच्छी बात जानते हैं क्या है? इसमें पैसे लगाने की टेंशन नहीं होती, सामान भेजने की चिंता नहीं होती, सब कुछ प्लेटफॉर्म संभाल लेता है। इसीलिए जो लोग अभी शुरुआत कर रहे हैं उनके लिए ये एक बेहतरीन ऑप्शन है। रीसेलिंग के अलावा भी ऑनलाइन दुनिया में कई तरह के काम मौजूद हैं, जैसे कंटेंट राइटिंग, छोटे मोटे ऑनलाइन टास्क, ऑनलाइन ट्यूशन। हर किसी के स्किल और समय के हिसाब से कुछ ना कुछ जरूर है। तो सुरक्षित तरीके से ऑनलाइन कमाई की शुरुआत कैसे करें? आइए इसके लिए एक बहुत ही सिंपल और प्रैक्टिकल प्लान देखते हैं। देखिए, इन स्टेप्स को फॉलो करने से फायदा ये होता है कि रातों रात अमीर बनो वाले स्कैम से बचकर सही तरीके से अपनी स्किल बनाई जा सकती है, एक्सपीरियंस हासिल किया जा सकता है और धीरे धीरे अपनी कमाई को बढ़ाया जा सकता है। और हाँ, सबसे जरूरी बात, ये कुछ सेफ्टी रूल्स हैं जिन्हें कभी नहीं भूलना है। एक बात गांठ बांध लीजिए, कोई भी असली कंपनी या असली मौका काम शुरू करने के लिए कभी पैसे नहीं मांगता, कभी भी नहीं। तो अब इस सारी जानकारी के साथ हमारा मकसद सिर्फ स्कैम से बचना नहीं है, बल्कि आत्मविश्वास के साथ उन असली मौकों को पहचानना और उन्हें हासिल करना है जो वाकई में हमारा इंतजार कर रहे हैं। सही जानकारी के साथ ऑनलाइन सफलता की यात्रा यहीं से शुरू हो सकती है। You know, the dream of working from home here in India is just massive right now. But here's the thing. For every legitimate opportunity out there, there's a scam lurking in the shadows. And it's designed to take not just your money, but your hope too. So today, we are going to pull back the curtain. I'm going to show you exactly how to spot the fakes so you can find that real work from home job you've been searching for. Let's jump right in.
All right, let's just get right to the big question, the one that's probably on your mind. Can you really make 1,000 rupees a day online without putting any money down? And the answer is absolutely. Yes, you can. But let's be clear, this isn't about some get-rich-quick fantasy. We're talking about real work that takes effort, consistency, and, most importantly, knowing where to look and what to avoid. And believe me, the kinds of jobs available are super diverse. These are real, skill-based gigs you can do with just your phone and an internet connection. I'm talking about things like content writing for different websites, doing microtasks that help train AI, becoming an online tutor, managing social media accounts for businesses, or even getting into affiliate marketing. The potential is definitely there. And that 1,000 rupee a day number, yeah, for a lot of people who are willing to put in the time, that is a totally realistic goal. And it's that promise, that potential, that makes these jobs so attractive. But it's also the exact same bait that scammers use to reel you in. And that's where this dream can turn into a real nightmare. Just look at this quote. This comes straight from Flipkart, one of the biggest companies in the country, and it's a huge warning sign for all of us. Their jobs are in high demand, for sure, but they are never, ever for sale. If anyone, and I mean anyone, asks you to pay for a job at a big company like that, you are not talking to a real recruiter. See, these fraudsters are smart. They know you trust huge names like Amazon and Flipkart. You want to work for them. So what do? They pretend to be recruiters. They use the company logos illegally, and they whip up these official-looking job offers that are completely fake. And their one and only goal is to trick you into paying for a job that simply does not exist. Okay, so if you want to protect yourself, you've got to understand how these people operate. You need to know their game plan. So let's break down the scammer's playbook step by step. It pretty much always follows this same 4-step pattern. First, it starts with a message out of the blue. Could be an SMS, an email, or maybe a WhatsApp message. And the offer just sounds a little too good to be true. Next, the person on the other end says they're a recruiter from a big company you've heard of. They'll ask for some personal details to make it feel all official. And then, right at the end, comes the big one. They demand money. This has a name. Companies like Amazon officially call it recruitment fraud. And it's not some simple little trick. It's a really sophisticated operation built to prey on your trust and your desire to find a good job. They'll make fake websites, send convincing emails. All of it is just to get your personal information and, of course, your money. And they'll have all kinds of legit-sounding reasons for why you need to pay. They'll say it's for a company laptop or maybe a uniform, or it could be for Mediclaim or insurance. Sometimes it's a security deposit, a documentation fee, or for training. You need to burn this list into your brain. If anyone asks you for money for any of these reasons, it's a scam. Full stop, end of story. Okay, so we've seen what the scams look like. Now, for the really important part. How do you spot a real job offer? Let's dive into the key differences that'll keep you safe. All right, here it is side by side. It's actually pretty simple when you see it laid out. Scammers will ask you for money. Real jobs are earned based on your merit, period. Scammers often use free email accounts, like Gmail or Yahoo. Real companies will always use their official email, like @amazon.com. Scammers try to create this false sense of urgency to pressure you. Real companies have a proper, official hiring process. And finally, scammers might contact you from a random mobile number, while a real recruiter will point you to the company's official careers website. The main thing to remember is that real companies have real, official, and verifiable processes. So let's make this concrete. Let's walk through an actual example of what a legitimate process looks like, say for becoming a seller on Meesho. See, it all starts on their official website. No weird links. You verify your contact info, and then you hit a really important step. It asks for your GSTIN for verification. That's a business detail. Then, you add your business address and bank details so you can get paid. Notice how professional and business-focused this whole thing is? And that right there, that is the crucial difference. A real platform might ask for something official, like a GSTIN, to verify you as a business partner. A scam, on the other hand, demands personal payments from you just for the chance to get a job. That's the red line you never, ever cross. So let's wrap all this up. We're going to put together a simple but really powerful checklist that you can use every single time you're looking for that next great work-from-home opportunity. Here we go, your 5-point safety plan. Number 1, and this is the big one, never, ever, ever pay for a job. Real companies do not charge you to get hired.
2. Always go to the official company careers page to verify the job opening is real. 3. Be really suspicious of any recruiter who's pressuring you to act now. 4. Check that email address. If it doesn't end with the official company name, it's a fake. And number 5, instantly reject any offer that comes from a free email account. Simple as that. Let's just end on this powerful reminder from Flipkart one more time. The best jobs, yeah, they're competitive, but they are always, with zero exceptions, earned on merit. They're about your skills, your qualifications, not about how much money you can pay up front. Look, the world of online work is packed with amazing, totally legitimate opportunities, but the risks are just as real. The good news is, now you have the tools to tell the difference. So get out there, be smart, stay safe, and go find that amazing work-from-home career that's waiting for you.